वेलकम टू बायो वर्ल्ड विद डॉक्टर मनीषा पटेल। कैसे हो सब? बढ़िया। ओके, होप सो आप सब अच्छे से प्रिपरेशन कर रहे होंगे, राइट? एंड नाउ विल मूव टॉवर्ड्स द एंड ऑफ दिस चैप्टर। सो आज तो सब बहुत खुश होंगे, हाँ चैप्टर हमारा खत्म होने आया। सही है ना? बट चैप्टर प्रिपेयर करना जरूरी है, खत्म करना जरूरी नहीं है। और साथ में उसका अंडरस्टैंडिंग, प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग, कंसेप्चुअली क्लियर होना जरूरी है। सही है ना? सो चलो चलते हैं हमारे आज के टॉपिक पे। टुडेज आवर टॉपिक इज एम्फीबॉलिक पाथवे। ओके, सो एम्फीबॉलिक, एम्फी मीन्स ड्यूअल। तो मैं सबसे पहले तुमको हमारे वे में, सिंपल वे में एक्सप्लेनेशन दे रही हूं। सो सबसे पहले जैसे बायो मॉलिक्यूल से ओके, तो जो बायोमोलिक्यूल्स है, वी नो दैट दे आर ऑफ मेनली थ्री टाइप्स, दैट इज कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन एंड लिपिड। फैट्स, कार्बोहाइड्रेट एंड प्रोटीन्स। अच्छा, सबसे पहले आपको पता है ना व्हाट इज कैटाबॉलिक एंड व्हाट इज एनाबॉलिक? यू नो ना व्हाट इज कैटाबॉलिक एंड व्हाट इज एनाबॉलिक प्रोसेस? ओके, कैटाबॉलिज्म, that is breakdown, right? So catabolism, that is breakdown, right? Just like respiration. In respiration, that breakdown of glucose occurs and results into formation of CO2 and H2O. So remember that respiration is catabolic process. Okay, when we talk about anabolism, that is synthesizing. So remember that photosynthesis is anabolic process, right? Because there 6 CO2 plus 12 H2O will synthesize 6 H12O6 plus 6 O2, whatever. Balance mat karo, tension mat karo. But just understand that respiration, which is catabolic process, and photosynthesis is anabolic process. तो ये जो टॉपिक है वो है एम्फीबॉलिक। एम्फीबॉलिक पाथवे मतलब ऐसा पाथवे जिसमें कैटाबॉलिज्म भी होता है और एनाबॉलिज्म भी होता है, जिसमें दोनों प्रोसेस होती है, जिसको बोलते हैं एम्फीबॉलिक। क्लियर? तो इतना तो समझ में आ रहा है कि यहाँ पे सिंथेसिस भी हो रहा है और ब्रेकडाउन भी हो रहा है, राइट? अब ये क्या हो रहा है कि ये जो
कार्बोहाइड्रेट, फैट और प्रोटीन है, राइट। अब जैसे हमें कार्बोहाइड्रेट का तो पता है कि भाई कार्बोहाइड्रेट फर्स्ट दे आर कन्वर्टेड इनटू सिंपल sugars, or as we know that the most widely respiratory substrate that is glucose. सबसे ज्यादा रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट क्या यूज होता है? ग्लूकोज। अच्छा, ग्लूकोज हमें पता है, याद करो, ग्लाइकोलिसिस ग्लूकोज 6 फॉस्फेट, देन रिमेंबर फ्रुक्टोज 1,6 बाय फॉस्फेट, एंड लेटर उसका कन्वर्जन होता है ट्रायोस फॉस्फेट, दैट इज डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट एंड फॉस्फोग्लिसराल्डिहाइड PGAL। अब यही PGL, राइट, विच इज कन्वर्टेड इनटू pyruvic acid, and this pyruvic acid then acetyl CoA intermediate link, or acetyl CoA is a connecting link between TCA cycle and glycolysis, and this acetyl CoA will enter into TCA, that is Krebs cycle, and during that step what happens? That removal of CO2 and H2O, राइट। ये तो हमने नॉर्मली सीखा है, क्रेब्स साइकिल, सही है ना? बिकॉज एज वी नो दैट मोस्ट वाइडली यूज्ड रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट इज कार्बोहाइड्रेट. Now when breakdown of fat occurs, it is converted into fatty acid plus glycerol. Now this glycerol enters to respiratory pathway by DHAP, and then it will enter into respiratory chain. But when we talk about fatty acid, this fatty acid will converted into acetyl CoA, and then it enters into respiratory chain. But जब सेल को ऐसा लगे कि भाई नहीं acetyl CoA बहुत है, then at that time that acetyl CoA can also be converted into fatty acid. देखो, जरूरत है एसिटाइल कोए की, देन फैटी एसिड विल कन्वर्टेड इनटू एसिटाइल कोए, एंड अब ऐसा लगता है कि एसिटाइल कोए की जरूरत नहीं है, देन एसिटाइल कोए कैन बी कन्वर्टेड इनटू फैटी एसिड. तो आप देख सकते हो यहां पे सिंथेसिस भी हो रहा है और मतलब कि रीफॉर्मेशन भी हो रहा है, राइट? तो ड्यूअल वे हो रहा है, फॉर्मेशन भी हो रहा है और रीफॉर्मेशन भी हो रहा है, राइट? सो यहां से एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, हाउ ग्लिसरॉल विल एंटर इनटू रेस्पिरेटरी मतलब कि पाथवे और ग्लाइकोलिसिस, राइट? सो रिमेंबर दैट ग्लिसरॉल विल एंटर बाय DHAP. Their fatty acid will enter into that cycle by acetyl CoA. This is most important. Same way, as we know that protein which is converted into amino acid, and this amino acid will convert it into pyruvic acid, and thus by this way they enter into cycle. तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मतलब कि क्वेश्चन है, हाउ फैटी एसिड एंटर्स इनटू चेन. Remember by acetyl CoA, glycerol by DHAP, amino acid by pyruvic acid. मतलब कि ये आपको समझा रहे हैं कि भाई हमने बोला है कि जो मेटाबॉलिक प्रोसेस है, राइट, कैटाबॉलिक और एनाबॉलिक, और उसमें भी जब हम रेस्पिरेशन की बात करते हैं तो रेस्पिरेशन में हमने पूरा देखा कि इसका ग्लूकोज, हियर ग्लूकोज इज यूज्ड एज अ रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट.
मतलब कि हमें ग्लूकोज में से एनर्जी मिलती है, राइट, क्योंकि हमने ये पूरा पाथवे ग्लाइकोलिसिस का देखा है। अब यहाँ पे ऐसा बोल रहे हैं कि भाई कार्बोहाइड्रेट तो यूज होता ही होता है, बट even you can also have energy by fats and proteins, right? But that pure form of lipid and protein will never enter to chain. रेस्पिरेटरी पाथवे में प्योर फैट और प्योर प्रोटीन कभी भी एंटर नहीं हो सकते. सो फैट मस्ट बी कन्वर्टेड इनटू इट्स सिंपल फॉर्म, दैट इज फैटी एसिड एंड ग्लिसरॉल, एंड प्रोटीन मस्ट बी कन्वर्टेड इनटू इट्स सिंपल फॉर्म, दैट इज अमाइनो एसिड. So the fatty acid will enter into respiratory chain by acetyl-CoA, glycerol will enter to respiratory chain by DHAP, and protein will enter by pyruvic acid. This is most important point to remember. राइट तो ये पाथवे याद रखना है, एम्फीबॉलिक पाथवे जो सबसे इंपॉर्टेंट है, राइट, और पूछ सकते हैं. तो ध्यान रखना ये एम्फीबॉलिक पाथवे का चार्ट कुछ भी नहीं है, बीच में आपका ग्लाइकोलिसिस है. बस याद रखना है कि फैट दे कन्वर्टेड इनटू सिंपल फॉर्म फैटी एसिड एंड ग्लिसरॉल, एंड प्रोटीन कन्वर्टेड इनटू अमीनो एसिड. सो ग्लिसरॉल विल एंटर बाय DHAP and fatty acid will enter into respiratory chain by acetyl-CoA, and amino acid, which is the simple form of protein, will enter into respiratory chain by pyruvic acid. ओके क्लियर बच्चा लोग, समझ में आ रहा है? तो पहले तो आपको ये समझ में आना चाहिए कि भाई रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट क्या है. तो जिससे हमें एनर्जी मिलती है हम उसको बोलते हैं रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट, राइट. तो यहां पे ये भी दिखा रहा है कि भाई जस्ट नॉट ओनली कार्बोहाइड्रेट इज यूज्ड एज अ रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट, बट वी कैन ऑल्सो हैव एनर्जी बाय फैट and even by protein also. So protein and fat also act as a respiratory substrate, but the most widely used respiratory substrate is glucose. सबसे ज्यादा कौन यूज होता है? ग्लूकोज. ओके ठीक है, चलो. So glucose is the favored substrate for respiration. पता ना सबसे वाइडली यूज कौन है? ग्लूकोज. All carbohydrate are usually first converted into glucose before they are used for respiration, right. Glucose they must be converted into its simple form, मतलब कि अगर स्टार्च है तो कन्वर्टेड इनटू ग्लूकोज, और अगर सुक्रोज है तो भी आपको पता है ग्लूकोज प्लस फ्रुक्टोज, पता है ना. अगर सुक्रोज हुआ देन इट विल बी कन्वर्टेड इनटू ग्लूकोज प्लस फ्रुक्टोज. ओके, सो अदर सबस्ट्रेट्स कैन also be respired, but they do not enter the respiratory pathway at the फर्स्ट स्टेप. सही बात है ना, ग्लाइकोलिसिस के फर्स्ट स्टेप में एंटर नहीं होते हैं डायरेक्टली, राइट. ओके, जस्ट लाइक अगर हम बात कर रहे हैं फैट की, तो फैट्स वुड नीड टू बी ब्रोकन डाउन इनटू ग्लिसरॉल एंड फैटी acid first,
if fatty acids were to be respired, they would first be degraded to acetyl CoA and enter the pathway. मैंने बोल दिया पहले ही, fatty acid converted into acetyl CoA and then it will enter into pathway. Glycerol would enter the pathway after being converted to PGL. देखो चार्ट में DHP दिखाया है और थियरी में PGL लिखा है, ध्यान रखना, वो दो ऐसे दोनों सेम है. क्लियर? तो ये हो गई बात फैट की. ठीक है. ओके, नाउ लेट्स टॉक अबाउट प्रोटीन. The proteins would be degraded by proteases and the individual amino acids, राइट. डीएमिनेशन के बाद अमीनो एसिड रिलीज होते हैं. देखो प्रोटीन होता है तो उसका डीएमिनेशन होता है, राइट. सो आफ्टर डीएमिनेशन, डिपेंडिंग ऑन देयर स्ट्रक्चर, would enter the pathway at some stage within the Krebs cycle, or even as pyruvate or acetyl CoA. बट पर हमें पता है किसके थ्रू एंटर होता है, पायरुवेट के थ्रू ही एंटर होता है, राइट. ओके, सिंस respiration which involves breakdown of substrates, the respiratory process has traditionally been considered as a catabolic process, राइट. जिसमें ब्रेक डाउन होता है तो हम उसको क्या बोलते हैं, कैटाबोलिक प्रोसेस. एंड respiratory pathway as a catabolic pathway. But here at some points in the respiratory pathway, different substrate would enter and they were to be respired
and used to derive energy. ओके, तो कुछ ऐसे भी पॉइंट है जिसमें दूसरे रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट एंटर होते हैं, राइट? ओके, सेकंड थिंग याद जो रखनी है जो वो है कि these very compounds, okay, तो very compounds that would be withdrawn from the respiratory pathway for the synthesis of the substrate. मतलब क्या बोल रहे हैं कि वेर या फिर some compounds that will be withdrawn from the respiratory pathway, they are used for the synthesis of substrate. ओके, मतलब कि कुछ सबस्ट्रेट ऐसे भी होते हैं कि जो और प्रोडक्ट बनाने के काम में भी आते हैं. ओके, देखो यहां पे फैटी एसिड वुड बी, मैंने आपको बोल दिया, ब्रोकन डाउन टू एसिटाइल कोए before entering the respiratory pathway when it is used as a substrate. तो हमने तो पहले ही देख लिया चार्ट में कि फैटी एसिड एंटर होता है किसके थ्रू, एसिटाइल कोए के थ्रू. बट when the organism needs to synthesize fatty acid, that acetyl CoA would be withdrawn from the respiratory pathway for it. समझ में आया? नॉर्मली फैटी एसिड कन्वर्ट होता है एसिटाइल कोए में, बट ऑर्गेनिज्म को ऐसा लगे कि भाई फैटी एसिड की जरूरत है तो एसिटाइल कोए से क्या फिर वापस क्या बन जाएगा, फैटी एसिड, राइट? सो हियर that respiratory pathway comes into the picture both during breakdown and even synthesis of fatty acid. And that's why it is known as a amphibolic pathway. समझ में आ रहा है? इसीलिए इसको क्या बोलते हैं, एम्फीबॉलिक पाथवे. ठीक है, ओके. अब सेकंड थिंग, सेम वे during breakdown and synthesis of protein to
respiratory intermediates form the link. सही बात है ना? एमिनो एसिड किसके थ्रू एंटर होते हैं? पायरुविक एसिड के थ्रू. ओके, और मैंने पहले ही बोल दिया था कि भाई ब्रेकिंग डाउन प्रोसेस क्या बोलते हैं उसको? कैटाबॉलिज्म. सिंथेसिस क्या बोलते हैं उसको? एनाबॉलिज्म. So here that respiratory pathway is involved in both anabolism and catabolism. Right? So it would better to consider the respiratory pathway as a amphibolic pathway rather than as a catabolic one. तो यहां से नीट में पूछा हुआ क्वेश्चन है कि भाई ये जो रेस्पिरेटरी पाथवे है वो कैसा है, कैटाबॉलिक है या एनाबॉलिक है. राइट? तो ये याद रखना, ये एम्फीबॉलिक है. कैसा है? एम्फीबॉलिक. ओके, क्लियर यहां तक का? डन. तो ये हो गया हमारा एम्फीबॉलिक पाथवे. बस कहानी खत्म. एक चार्ट क्लियर हो जाए आपका, तो चार्ट आ जाए तो सब कुछ क्लियर. राइट? तो ये हो गया एम्फीबॉलिक पाथवे. बस कहानी तो आप अपने आप भी लिख सकते हो. राइट? बस एक चार्ट आना जरूरी है. फैटी एसिड विल एंटर थ्रू एसिटाइल कोए, ग्लिसरॉल विल एंटर थ्रू DHAP और PGL, एंड एमिनो एसिड थ्रू पायरुविक एसिड. फैटी एसिड कैन बी कन्वर्टेड इनटू एसिटाइल कोए. जरूरत है तो एसिटाइल कोए कन्वर्टेड इनटू फैटी एसिड. सो दिस इज अबाउट एम्फीबॉलिक पाथवे. ठीक है? समझ में आया? वेरी इजी. पूरे चैप्टर में सबसे इजी ये है, और इससे भी इजी तो ये है रेस्पिरेटरी क्वेश्चन, RQ. रेस्पिरेटरी क्वेश्चन. अब ये हो रहा है कि ये RQ क्या है, तो चलो मैं उसके लिए समझा देती हूं कि भाई RQ क्या है. ओके, RQ दैट इज रेस्पिरेटरी क्वेश्चन. अब हमें पता है कि भाई जब भी हम बात करें एरोबिक रेस्पिरेशन, सो ड्यूरिंग एरोबिक रेस्पिरेशन O2 is consumed and CO2 is released. So the ratio of volume of CO2 evolved to the volume of O2 consumed in respiration
is called RQ, respiratory quotient, or respiratory ratio. तो RQ मीन्स सिंपली आप ऐसा बोल सकते हो दैट वॉल्यूम ऑफ CO2 इवॉल्व्ड, जो बड़ा है वो ऊपर आएगा तो CO2 बड़ा है अपन वॉल्यूम ऑफ O2 कंज्यूम्ड. अब यहां पे क्वेश्चन अराइज होता है कि भाई हाउ दिस RQ विल बी हेल्पफुल, राइट? So remember that the respiratory quotient, which depends upon the type of respiratory substrate used during रेस्पिरेशन. तो रेस्पिरेशन में कौन सा रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट यूज होता है उसके बेस पे आरक्यू की वैल्यू डिपेंड्स होती है. दूसरे फॉर्म में मैं आपको बोलूं कि आरक्यू की वैल्यू से आप बता सकते हो कि कौन सा रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट यूज हुआ है. जैसे आप देख सकते हो, दिस इज द फॉर्मूला फॉर aerobic respiration. So here you can see that RQ value is equal to CO2 evolved upon O2 consumed. CO2 कितने मॉलिक्यूल्स है? 6. O2 कितने हैं? 6. 6 by 6 is equal to 1. तो अगर मैं आपको बोलूं कि भाई RQ वैल्यू 1 है, then you can simply say that respiratory substrate must be carbohydrate, that is glucose, राइट? तो जब भी आपके पास RQ की वैल्यू 1 है तो आप समझ जाओगे कि RQ की वैल्यू 1, दैट मीन्स द रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट मस्ट बी कार्बोहाइड्रेट, दैट इज ग्लूकोज, इट मे बी फ्रुक्टोज. सेम वे, if the RQ value is less than 1, then it is of फैटी एसिड. जैसे यहां पे फॉर्मूला दिया है ट्राइपामिटीन C51H98O6 प्लस 145O2 will gives 102 CO2 plus 98 H2O plus एनर्जी. तो आप देखो यहां पे जो RQ की वैल्यू है, RQ इज इक्वल टू CO2 अपन O2. CO2 है 102, O2 कंज्यूम है 145, सो RQ इज 0.7. तो जब भी 0.7, दैट मीन समझ जाओ किसकी बात है? फैटी एसिड. और दिस इज द एग्जांपल ऑफ ट्राइपामिटीन, राइट? दिस इज द एग्जांपल ऑफ ट्राइपामिटीन. ओके, चलो नेक्स्ट मैं एक्स्ट्रा बता देती हूं आपको. ऑर्गेनिक एसिड, ये एक्स्ट्रा है. ऑर्गेनिक एसिड ट्वाइस COOH ट्वाइस प्लस O2 will gives 4 CO2 plus 2 H2O plus एनर्जी. तो यहां पे आपको पता है कि भाई RQ is equal to CO2 अपन O2, 4/1, that is 4. सो ऑर्गेनिक एसिड के लिए जो RQ है वो कितना है? 4, राइट? क्लियर? ओके, चलो अब आप मुझे बताओ. अच्छा, मैं आपको पहले बता देती हूं कि भाई अगर प्रोटीन है तो प्रोटीन के लिए RQ है 0.9. ओके, नाउ योर टर्न. मैं ये एक फॉर्मूला लिख रही हूं. दिस इज फॉर्मूला ऑफ एनारोबिक रेस्पिरेशन. C6H12O6 will gives twice C2H5OH
plus 2CO2 plus energy. So let me know what is the RQ for this anaerobic respiration. Come on fast. Come on, come on, come on. Okay, you are truly bio students. You don't know basic maths. Right? एनारोबिक रेस्पिरेशन के लिए आप देख सकते हो O2 यूज नहीं हुआ है. CO2 भले 2 है, 2/0, दैट इज इनफाइनिट. आया समझ में? एनारोबिक रेस्पिरेशन में इनफाइनाइट बिकॉज यहां पे ऑक्सीजन यूटिलाइज ही नहीं होते हैं. ठीक है, तो 2/0 दैट इज इनफाइनिट. डन. So RQ allows us to know as to which substance is being respired. समझ में आया? तो रेस्पिरेटरी मतलब कि RQ की वैल्यू के थ्रू हमें पता चलेगा कि भाई कौन से सबस्ट्रेट का यूज हुआ है. अगर RQ1 है तो कार्बोहाइड्रेट दैट इज ग्लूकोज. अगर RQ 0.7 है तो ट्राइपामिटिन दैट इज फैटी एसिड. अगर RQ4 है तो ऑर्गेनिक एसिड. अगर RQ9 है तो प्रोटीन. वन है तो कार्बोहाइड्रेट. एंड इन्फिनिटिव है देन दैट रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट मस्ट बी और एनारोबिक रेस्पिरेशन. अगर इनफाइनिट है तो एनारोबिक रेस्पिरेशन होगा. ठीक है, क्लियर? तो ये हो गया आपका RQ रेस्पिरेटरी क्वेश्चन. ओके, मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज जो याद रखनी है कि लिविंग ऑर्गेनिज्म में रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट आर ऑफन मोर देन वन. सही बात है ना? सिर्फ कार्बोहाइड्रेट ऐसा नहीं होता है, प्रोटीन लिपिड भी रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट यूज हो सकते हैं. बट प्योर प्रोटीन्स और फैट्स आर नेवर यूज्ड एज रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट. प्योर प्रोटीन और प्योर लिपिड कभी भी प्योर फॉर्म रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट यूज नहीं होता है. फैट मस्ट बी कन्वर्टेड इनटू फैटी एसिड एंड ग्लिसरॉल एंड प्रोटीन मस्ट बी कन्वर्टेड इनटू एमिनो एसिड. समझ में आया? डन. ओके, तो ये हमारा RQ खत्म हो गया. अगर आपको समझ में आया है तो लाइक करना भूलना नहीं. थैंक यू.